So hello students. So we are doing our chapter 2 cascading style sheet, and so far we have discussed about the introduction of cascading style sheet, which is nothing but the CSS which give the enhancement to the web pages. And I have told you how to create a simple web page using the HTML properties and attributes. So I have shown you how to use the heading tag, how to use the head, body, title, and I have showed you the marquee tag, the bold, the italic, and etc. So these were the very basic tags, or we can say the very basic attribute that we have used. So now what we are going to do is we will just explore the text properties and font properties of CSS, because first we have understood what is web page. Now we are going to do the CSS portion. So CSS is embedded with the HTML, as you all know that. So we are going to use CSS property in HTML coding only. So there is no another step, or you have to do extra efforts for that. You just simply write the CSS in your HTML coding. So that will be embedded. So what we are going to do is first we will save, or we can say we will create our file. So I will create on new. It is already open. So I will save as. I will click on the save as. So now I'm giving this name text, okay, or you can say text properties. Then I have to mention the .html extension. If we will not put this .html extension, then it will not be saved as the web page. And I have to select as the save as type in all files. Once I will select the all files, then it will be converted into the web page, that means the HTML page. So now I will save it. Here you can see in your title that text properties .html. Okay, now I'm going to use the HTML tag in the angular bracket. Then I have to mention the head. In head we specify the title, and in title I'm going to use text properties in CSS. So here I'm going to end the title. Then that's it from the head portion. Now I will mention the style tag. Yes, student, this is the very important tag which we are going to use is style tag. Style tag is used to embed the CSS style, or we can say the cascading style sheet into our HTML web page. So whenever we want to add, or whenever we want to apply the CSS effects in our web page, then we have to mention the style tag. So how style tag is written? You have to specify the angular bracket, then you have to write style style, then you have to write the type also. Type is nothing but a standard that we should follow. ओके, तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले स्टाइल, फिर आपको क्या लिखना है? टाइप. टाइप में आप ये बताते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हम CSS अप्लाई करने वाले हैं. बस ये एक स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना ही होता है. स्टाइल लिखने के बाद आप जितने भी CSS के प्रॉपर्टीज हैं आप उनको यूज कर सकते हैं. तो सपोजिंगली हमें प्रॉपर्टी यूज करना है बॉडी के ऊपर. तो बॉडी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेलेक्टर. देखिए, जब हमने बात की थी CSS की, तो हमने बात की थी उसकी सिंटेक्स की. सिंटेक्स में हमें सबसे पहले ये चूज करना होता है कि आखिर जो है हमारी जो CSS के एनहांसमेंट है, CSS के जो ब्यूटीफाई इफेक्ट्स हैं, वो किसके ऊपर आपको लगाना है. तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बॉडी को. तो बॉडी हमारा क्या हो गया है? एज अ सेलेक्टर. अब सेलेक्टर के बाद आपको क्या करना होता है? डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट करने होते हैं, जो हमने पाइथन में भी किए हुए हैं. डिक्लेरेशन ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया है. उसके अंदर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ? कलर. कलर यूज किया, फिर मैंने कॉलन यूज किया. कॉलन के बाद मैं लिख रहा हूं ब्लू. ठीक है, मेरे को कलर में केवल इतना ही देना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन. अब टेक्स्ट डेकोरेशन. टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने कह दिया कि ये अपने कर लेते हैं अंडरलाइन. ठीक है, बस. अब देखिए, ये जितनी भी हमने कोडिंग लिखी है यहाँ पर डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर, ये किसके ऊपर अप्लाई होगी? बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी. ठीक है, चलिए, तो फिर अब इतनी ही मेरे को स्टाइलिंग करनी थी, इतना ही मेरे को CSS लिखना था. तो मैंने यहाँ पर स्टाइल को यहाँ पर क्लोज कर दिया.
स्टाइल को क्लोज करने से क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने इसकी CSS की कोडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कर दी। हमारा सेलेक्टर जो क्या था वो बॉडी था, बॉडी के बाद हमने डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट किया। ये जो हमारा हो गया ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की हमने वैल्यू क्या दी, ब्लू। टेक्स्ट डेकोरेशन ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, इसकी हमने वैल्यू क्या दी, अंडरलाइन। फिर यहाँ पर मैंने स्टाइल को क्लोज कर दिया। अब हमें बॉडी क्रिएट करनी होती है, आपको पता ही है। तो फिर देखिए बेटा, हेड हमने यहाँ पर पहले से ही बंद कर दिया है, जबकि हेड आपको यहाँ पर बंद नहीं करना है, सॉरी। हेड आपको हमेशा स्टाइल में, स्टाइल को बंद करने के बाद बंद करना है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द टाइटल, देन यू हैव टू क्रिएट द स्टाइलिंग इन द हेड सेक्शन, यानी कि स्टाइलिंग हम हमेशा किस सेक्शन में करते हैं, हेड सेक्शन में करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने हेड को क्लोज कर दिया। हेड को क्लोज करने के बाद अब मैं किसको स्टार्ट करूंगा, बॉडी को, पोर्शन को। तो BODY बॉडी, यहाँ पर मैंने यूज किया H1 और मैंने यहाँ पर यूज किया सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या करेगा, मेरा जो भी टेक्स्ट होगा उसको सेंटर में कर देगा। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ये मैंने लिख दिया। डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। मैं आप एक बार आपको बिना इन्वर्टेड कोमा लगाए हुए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या बंद करना होगा, सेंटर। के बाद मैं किसको क्लोज करूंगा, H1 टैग को, ठीक है। मान लेते हैं हमें अभी केवल इतना ही लिखना है। अब एक होता है P टैग HTML का। P टैग क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हो। पैराग्राफ के लिए आप क्या करते हो, P टैग। P टैग के अंदर मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर refers to an electronic device which I am writing the paragraph, that's why I am using the long lines, okay, which facilitates us in every aspect of life. It provides smoothness in working and making our daily life daily life very easy. Okay, supposing that was my paragraph, then that's it. I will just close the paragraph tag again. Then what? So I have finished my body section. I will close the body section now. Then I will close the last tag, which was the HTML. Then I will click the Control S. देखिए स्टूडेंट्स, हमने किया क्या है, हमने एक HTML टैग बनाया। HTML टैग हम सबसे लास्ट में क्लोज करते हैं। फिर हमने हेड सेक्शन स्टार्ट किया। हेड सेक्शन के अंदर हमने क्या क्या रखा है, हमने हेड सेक्शन के अंदर रखा है टाइटल। टाइटल के बाद अगर हमें CSS स्टाइलिंग करनी है, देन वी हैव टू मेंशन इट इन द हेड सेक्शन। तो हमने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग को रखा है। स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या किया है, बॉडी नाम का सेलेक्टर है, उसको हमने किया है बॉडी सेलेक्टर ये रहा, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी लिखा जाएगा उसका कलर क्या आएगा, ब्लू। और टेक्स्ट डेकोरेशन कैसी होगी, अंडरलाइन। तो चलिए देखते हैं, इसको सेव कर ही लिया है मैंने। अब हम वापस चलेंगे हमारे दिस PC वाले पोर्शन पे। यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज .html है। वेट फॉर द आउटपुट, इट इज लोडिंग। Sometime it takes time because it is the local web page. Here it is. Okay, here now you can see everything is in blue, as you can see, and everything is in underline form. Why? Because we have applied the CSS property, the text decoration in underline for all over the body, because our selector was the body and we have applied the text decoration underline. That means whatever we will write in the body section will be underlined. Okay, here you can interrelate. बॉडी जो हमारा सेलेक्टर था उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ था कि टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आपको क्या करना है, जितना भी टेक्स्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर जो बॉडी सेक्शन है उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हम अभी कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं,
टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर हम किसको डील करेंगे? ओनली टेक्स्ट को डील करेंगे। तो टेक्स्ट का कलर हमने किसको किया है? ब्लू किया है। और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या लिखी है? अंडरलाइन की है। ठीक है, तो ये जो था किसके लिए था? बॉडी सेक्शन के लिए। व्हाट इफ आई राइट हियर पी ओनली? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर केवल P लिखता हूं तो यहाँ पर हमारा सेलेक्टर क्या हो जाएगा? P। और P के अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो किसके अंदर हो जाएगा? ब्लू। और P के अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो किसके अंदर हो जाएगा? अंडरलाइन के अंदर। तो चलिए सेव कर देता हूं मैं इसको, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो था वो अभी वापस से ब्लैक में हो चुका है, बट वो सेंटर में ही है। लेकिन जो हमारा CSS की कोडिंग थी, CSS की कोडिंग में हमने किसको सेलेक्ट किया हुआ है? P को, यानी कि पैराग्राफ को। और पैराग्राफ अभी भी किस में है? ब्लू में है और अंडरलाइन में है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक फिनोमेना, दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू यूज द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। एवरीवन गॉट इट? So this is how we have used the text property of CSS. अब देखिए इससे हमें फायदा क्या होगा? अब जैसे ही मेरे को पैराग्राफ के अंदर कुछ भी चेंजेस करने, मान लीजिए कुछ भी चेंजेस करने मुझे पैराग्राफ के अंदर, तो मुझे बार बार जो है हर एक के बाद यहाँ पर मुझे फॉन्ट कलर वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। आप बस क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको चेंज करना होगा आप इसके अंदर कर लेंगे और वो सीधा P के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? अपने को ज्यादा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, एज वेल एज हमें ग्लोबल चेंजेस के लिए अलाउ करता है। कौन? CSS। ओके, so I hope that everyone has understood how to use the text properties. Now after the text properties we are going to use the font properties. Okay, so what we need to do is we have to just remember the font properties in our mind. What were they? They were the font families, font style, font size, and etc. So I'm going to use this same code, but I will manipulate it accordingly. Okay, so I will manipulate it according to font properties. So here, instead of using color, instead of using text decoration, I will use the font family, font style, or font size. Okay, so I'm not going to change this H1 or this P, that means the paragraph. So now here I will change. I am going to select the P only here, and supposingly I want here font family. Font family से क्या होगा? फॉन्ट फैमिली से जो है आपके फॉन्ट का फेस चेंज हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली में मैंने यहाँ पर कर दिया अल्जेरियन। ओके, हियर आई विल सेलेक्ट फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होगा? सपोजिंगली मैंने कर दिया यहाँ पर रेड। और फॉन्ट स्टाइल माने कि इसका साइज क्या होगा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल मैंने यहाँ पर कर दिया 18 पिक्सल्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रेड नहीं हुआ है ना। ओके, लेट मी चेक इट। फॉन्ट कलर COLOR कलर एंड देन रेड। So we will consider the font family. So here I have changed the font family to the Times New Roman, and here I have given the font size is equals to 28 pixels. So while giving the 28 pixel, we can see the output, and here is the output. You can see that the text are already enlarged in the size. So this is how you can use the font family and font properties, etc. So now we are going to understand, we are going to just learn how to use the border properties. Okay, so our next topic will be the border properties. Here it is. So border properties is what? Just like we enhance our borders in the just simple word processor, in simple word pages, that's how we can also enhance, we can also format our web page in border also. So okay, so the border properties are used to specify the border style, border color, border width, etc. तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? बॉर्डर को स्टाइलिंग दे सकते हैं, बॉर्डर की कलर चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन चूज द बॉर्डर विड्थ आल्सो. सो डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज. सो टुडे ओनली वी आर गोइंग टू learn it, understand it theoretically, then I will implement it practically. Okay, so first one is the border style. So this property specifies whether a border should be solid, dashed line, डबल लाइन और वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज. सो बॉर्डर स्टाइल क्या बताता है आपको कि आपको बॉर्डर का स्टाइल करना कैसे, बॉर्डर की स्टाइलिंग आपको देनी कैसे.
क्या आपको सिंगल लाइन बॉर्डर देने हैं, क्या आपको डैश करना है, या आपको डबल लाइन बॉर्डर्स देने हैं. ओके, सो वी शुड रिमेंबर दैट द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज. हाउ मेनी वैल्यू इट कैन टेक? It can take 4 values for the top order, for the right order, for the bottom order, and for the left order also. Okay, next property is the border color. Border color means this property specifies the color of a border. जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि बॉर्डर कलर क्या करेगा, बॉर्डर का कलर चेंज करेगा. बॉर्डर का कलर जैसे आपने रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, एंड एक्सेट्रा. बॉर्डर विड्थ, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ अ बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर आप कितने ज्यादा डार्क, कितने ज्यादा बोल्ड आप दिखाना चाहते हो. आप यहाँ पर कोडिंग में देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर बॉडी को सेलेक्ट किया है. बॉडी के अंदर इन्होंने बॉर्डर स्टाइल को दिया है सॉलिड, बॉर्डर कलर को इन्होंने दिया है रेड, और बॉर्डर विड्थ को 4 पिक्सल्स पे सेट किया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में कि बॉर्डर का कलर जो आ रहा है वो रेड है, स्टाइल जो है वो सॉलिड है, यानी कि लाइन जो है वो सॉलिड ही है, और विड्थ जो है वो उसकी 4 पिक्सल्स मोटी या फिर आप कह सकते हो एनलार्ज्ड वे में आ रही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द बॉर्डर प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज. So as the name suggests, background properties used to give the background effects. So different background properties are as follows. The very first, the very obvious is the background color. The background color property is used to what? Specify the background color of an HTML tag. So the following example demonstrate the use of CSS background color property in HTML code. So here they have given the background to the green. So here you can see in the output that all the background of the screen is being changed into the green color. Okay. Yes, the very obvious property is background image. The background image property specify an image to use as the background of an element. What if you want to add the image in your background? So you can add the background image. Okay, so the following example demonstrate the use of CSS background image property in HTML code. So what you have to do is you have to write the background hyphen, that means the minus sign, and you have to write the image. Then you have to specify the URL. URL is what? The exact location of your image, where it is located. Once you will give the URL, then it will reflect. Then it will reflect the same image which you want to put as your background. Okay. Next is margin properties. I'm going to cover all the properties so we can also be ready for the chapter completion, chapters conceptual completion, because if we will do only the coding part, then when we will cover the whole chapter. Okay, so this is the margin properties. As the name suggests, it will give you the page margin. You can set the margin to the left, to the right, to the top, and to the bottom. So all the margin properties can have the following values. What are the values? Auto, length, percentage, and inherit. So what do you mean by the auto? The browser calculates the margin, यानी कि auto जैसे ही आप margin देते हैं तो browser अपने आप ही उसको automatic margin दे देता है, यानी कि set कर देता है पेज के accordingly. Next है length. It specify a margin in pixels, pt, cm, etc. यानी कि आपको जो भी length देनी है वो अपने को specify करना होता है कि आपने pixels में देना चाहते हैं, points में देना चाहते हैं, या centimeters में देना चाहते हैं. परसेंटेज साइन, इट स्पेसिफाई अ मार्जिन इन परसेंटेज. अगर आपको मार्जिन परसेंटेज में देना है, देन यू कैन आल्सो यूज द परसेंटेज सिंबल. इनहेरिट, इट स्पेसिफाइज दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट. पेरेंट एलिमेंट इज व्हाट? जो भी हम मार्जिन यूज कर रहे हैं वो उसके एक मार्जिन के ऊपर जो भी उसका सेम है वो का वो मार्जिन आ जाए. जैसे कि मान लेते हैं कि अपन ने सेलेक्टर लिया है पी. P मीन्स पैराग्राफ. तो पैराग्राफ में जो भी अपन ने मार्जिन दे रखा है उसके नीचे अपन ने एक और H1 यूज कर रखा है. तो हम इनहेरिट का यूज करके जो भी P1 के अंदर फॉर्मेटिंग की गई है वो सेम का सेम हम H1 के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि उसको रीयूज कर सकते हैं. हियर यू कैन सी बॉडी कलर दे रखा है ब्लू. P के अंदर मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, एंड मार्जिन लेफ्ट. ओके. Here is the outline properties. Outline properties देखिए बहुत ही ज्यादा इजी होती है outline property, क्योंकि ये क्या करती है, हमें outline यानी कि एक border create करने के लिए option देती है. And outline is a line that is drawn. Sorry students, so this is enough. We will do from today only, and the rest of chapter we will cover in the next meeting. So take care. Bye bye.